तो बेसिकली भारत पे ने क्या किया है, इतना सारा पैसा इकट्ठा करा है टू पे द all these crores of rupees, millions of dollars to offer BMW bike और दुबई पार्टी फॉर देयर इंजीनियरिंग टीम। तो पैसा तो इसी पे ही उड़ा रहे हैं ये लोग, ताकि दुबई पार्टीज दुबई पार्टीज हो और BMW दें सारे इंजीनियर्स को। सबको पता ऑनलाइन। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? दिस वीडियो इज भारत पेज प्लान टू विन द लेंडिंग गेम। तो अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखना शुरू कर दिया है तो ये नाम जो है ना सुने होंगे, बिल्कुल जो है ना आपके दिमाग में आ ही रहे होंगे। द गोल ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन व्हाट भारत पे डज, हाउ डज भारत पे मेक मनी, विल भारत पे कम आउट ऑन टॉप हैविंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम गूगल, पेटीएम, Amazon, उड़ान, फ्लिपकार्ट, and will it win the game? ठीक है। और before even I get to the their business model, to understand what they are doing, how they are making revenue, let's start with their funding history. तो भारत पे एक यूनिकॉर्न। So उसकी फंडिंग हिस्ट्री देखते हैं। 2021 में वो यूनिकॉर्न बना था। 2018 they got seed funding of $2 million. 2019 February they had a Series A round which was of $14.5 million led by Sequoia India. Then a Series B round in June 2019, $50 million led by SteadView, Insight and Ribbit Capital. Series C round in February 2020, $75 million, Ribbit Capital and Co2. Debt financing round of 250 crores in January 2021 by Alteria Capital, Innovin Capital. Series D round in February 2021, $108 million, जिसके बाद ये कंपनी बन गई यूनिकॉर्न। फिर हुआ another debt financing round of 50 crores in May 2021 led by Northern Arc Capital, which is a Tamil Nadu based VC firm. Then there is a secondary market round. मैं इसके बारे में मेरे को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, but as per the information जो मुझे ऑनलाइन मिली मैं ये बताता हूँ। Basically a secondary market round is where investors sell out all of their existing securities, bonds like a mutual fund, which was of $20 million in August 2021. Then happened a Series E round of $350 million led by Tiger Global Management, which is a massive firm. Like बस Tiger Global से फंडिंग मिल गई तब तो तुम जो है ना like to the moon, Dogecoin to the moon. Okay, there were two debt financing round of 200 crore and 100 crore in October 2021 by MAS Financial Services. Right now their current company's entire valuation of BharatPe is $2.85 billion. Also there is news that they might do another fundraising round of $150 million at 4 billion valuation in February 2022. But again, this is news. We don't have any confirmed sources of it. All these crores of rupees, millions of dollars to offer BMW bike और दुबई पार्टी फॉर देयर इंजीनियरिंग टीम। तो पैसा तो इसी पे ही उड़ा रहे हैं ये लोग, दुबई पार्टीज हो और BMW दें सारे इंजीनियर्स को। सबको पता ऑनलाइन, तो ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। ऑल्सो व्हाट दे डिड वाज दे एक्वायर्ड अ कंपनी विच इज अ लॉयल्टी प्रोग्राम कॉल्ड पेबैक in June 2021. Payback is basically a loyalty program and marketing program for customers of retail business. Now, एक बारी जो है ना, let's take a look at the history of Ashneer Grover, who was the co-founder and CEO of BharatPe till August 2020. Now, Ashneer is a BTech grad from IIT Delhi and a business management student grad from IIM Ahmedabad. Really good credentials. Like फंडिंग मिलने में बहुत आसानी हो जाती है जब तुम्हारे पास ऐसे क्रेडेंशियल्स हो। मैं ऐसा लकी आदमी नहीं हूँ, बहुत ही बढ़िया, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। मतलब IIT IIM जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना तो VCs पागल हो जाते हैं। Okay, jokes aside, so after graduating from IIM Ahmedabad, he started as an investment banker from Kotak Wealth Management Services, and he वहां पे उन्होंने 7 साल काम किया। He led many companies through IPOs and created a wealth of about $3 billion working with Kotak Wealth Management Services.
After 7 years, he went to join Amex, American Express, in 2013, where he worked on the payments and fintech growth in India and helped raise a Series B round for MobiKwik as well. तो ये वाला जो सारा एक्सपीरियंस था, working with Kotak Mahindra Bank as an investment banker, then working with Amex, both are, in financial services. So he actually got to understand how the financial payment services is like in India. He पूरा गेम समझ में आया. तो ये एक्सपीरियंस काफी वैल्यूएबल था अश्नीर के लिए. मल्टीपल फंड रेजिंग राउंड किए. इट हेल्प्ड हिम बिल्ड ऑल हिज कनेक्शंस विद इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ. देन इन सम टाइम, आई थिंक इन 2015 या 14, मेरे पास एक्यूरेट डेट मैंने लिखी नहीं, आई एम सॉरी, he went to join Grofers as its CFO. And even though यहाँ पे उसका जो है ना ज्यादा टाइम नहीं Grofers पे ही spent, it gave him a lot of experience and built a VC network for him. Now, after Grofers, he led the digital transformation in payments at PC Jewelers across the country, building on the blocks of Paytm, Pine Labs, and PhonePe. BharatPe की शुरुआत कहाँ से हुई? So, in 2018, a person named Shashwat Nakrani, who is also a co-founder of BharatPe. Shashwat Nakrani was working on a UPI-led idea where fintech could be completely revolutionized. It was going to be a game changer, essentially. तो यहाँ पे अश्नीर मिला शाश्वत से. He decided that, कि मैं एक एंजल इन्वेस्टमेंट करूंगा in the idea, which led to the inception of BharatPe जो वो आज है. 2018 में उस टाइम पे Paytm, Flipkart और Amazon का कंप्लीटली क्लोज्ड पेमेंट्स इकोसिस्टम था. क्लोज इकोसिस्टम से मतलब आप किसी तरह की इंटरएक्टिविटी नहीं थी बिटवीन डिफरेंट एप्स, कोई इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी. तो अगर Amazon पे यूज कर रहे हो तो Amazon के लिए ही वो यूज होगा. Paytm यूज कर रहे हो तो Paytm का QR कोड Paytm की ही ऐप पे चलेगा. मेरा मतलब ये है. भारत पे की जो कोर MVP था, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो आया इसमें that they are going to create a generic standardized QR code which will be interoperable for all the merchants. सारे दुकानदार और merchants के लिए जो है ना काम आसान करने का गोल था यहाँ पे, कि जो है ना इतने सारे स्टिकर्स ना चिपकाओ, एक दुकान पे एक स्टिकर चिपकाओ जिसपे सारी एप्स चल जाए. अपने आप में काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया है. कैसे हुआ, मतलब ये QR कोड कैसे बनता था? So what it did was it used merchants' mobile number, it used their bank account details and their IFSC code to create a VPA, which is virtual payment address in the QR. और जो चीज truly revolutionary थी in their payments model was कि जो है ना they did not set up like charge any setup fees. तो दुकानदार जब जो है उस QR कोड को यूज करता था जो भारत पे ने जनरेट करा, उसकी जो है कोई फीस नहीं होती थी, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी दुकानदार मर्चेंट को, और ट्रांजैक्शन में भी किसी तरह का कोई कट नहीं लेते थे. ऐसे इन्होंने अपना मॉडल सेटअप किया भारत पे ने, बाय not taking any money from the merchant. By end of 2018, in October 2018, they got about 1 million merchants on their platform using their QR code, and which led to the seed funding round of $2 million. By October 2019, almost एक साल बाद, UPI had gotten, like UPI as a general technology in India had got to like 1 billion transactions monthly. 1 billion यानी कि 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस मंथली हो रही थी UPI एज अ टेक्नोलॉजी इंडिया में. भारत पे के लिए जो है ना, जो QR कोड था मर्चेंट्स के लिए, वो सिर्फ एक हुक था टू एक्चुअली गेट देम टू यूज द प्रोडक्ट. लेकिन इसमें जो जरूरी बात ये है कि भारत पे केप्ट अ डिटेल्ड डेटा ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन जो हो रही थी उनकी ऐप पे, कलेक्ट करती थी सारा मर्चेंट डेटा को. द गोल है भारत पे का was to offer small ticket loans to these merchants on their app, like MSME type of loans. Now, as per data that was extracted from 2017 and 18, there is a capital gap of $380 billion in the credit loans to MSME market. तो इस मार्केट को बेसिकली भारत पे का गोल था टू टैप इनटू दैट मार्केट. भारत पे ने इसी को अपना मिशन बनाया कि जो है ना हम इस मार्केट को टैप करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो एंड जनरेट मनी फॉर आवर इन्वेस्टर्स as well as for our organization. Now, BharatPe's MVP, which is the QR code, the standardized QR code, is built on Twilio, Google Sheets, IFTTT, and Beam app technology, which compile to form the QR code. Now, ये जो है ना देखने में एकदम सिंपल लगेगा, but
असलियत में उनकी जो प्रोडक्ट टीम है रियली हेविली इन्वेस्टेड है, हाई सैलरीज लेती हैं टू मैनेज ऑल दी 60 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस विद 99.6 सक्सेस रेट। ये काम आसान नहीं है, लेकिन 99.6 सक्सेस रेट, 60 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस आसान काम, मतलब आसान चीज नहीं है। इसी वजह से देयर इज अ हाई सर्वर कॉस्ट। AWS पे उनका प्लेटफॉर्म बिल्ट है, तो देयर इज अ सर्वर कॉस्ट। उस वजह से मैनेजिंग ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, भारत पे वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट what it did was it improved their stickiness as an app. Stickiness से मेरा मतलब है उनकी जो acquisition cost है और उनका जो continuous use case है वो बहुत लो है। May 2019 they partnered with Apollo Finvest to do a pilot for merchant loan. तो Apollo Finvest के साथ उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग जो है ना एक ट्रायल लेंगे कि मर्चेंट लोन्स देना हम शुरू करते हैं जो भी हमारे ऐप पे मर्चेंट्स हैं। they employed a lot of field agents to help all these merchants get started on their app, जो है खुद से इनकी भारत पे का जो QR कोड है अपनी ऐप पे नहीं यूज कर पा रहे थे, बिकॉज बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी प्रोफेशन नहीं है इंडिया में, तो ये रीजनेबल है। They used to pay them a salary of 20,000-30,000 based on the number of merchants they were able to onboard on their app, which helped them increase the adoption. So they got to a field force of 3,000 plus field agents, promoting their app, getting them to adopt the BharatPe. By July 2019, Salman Khan was onboarded as a brand ambassador and he did an ad for BharatPe saying "Dukandar is king." लकी साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। चले चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या मिला? ओहो गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग और आपको क्या मिला? नथिंग। पर अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। और उसका गोल ये था कि जो है ना Tier 2 और Tier 3 सिटीज जहां पे ढेर सारे सलमान खान के फैंस हैं, बेसिकली दे बिकम अवेयर ऑफ BharatPe's offering and they start to use that. The merchants start to use BharatPe's QR code, they start using their app. By August 2019, they had 1.5 million merchants on their platform. And with competition from Google, Amazon, Paytm, this was not an easy task because they also want the merchants to, use their sticker on their galla, Dukandar's galla, or you could say the shop. But zero fees, interoperable QR was the barrier to entry that BharatPe created. By 2020, their focus was to start working on the lending platform and start providing $500 loan for 3 months to the merchants. Within 7 months, BharatPe had reached a scale where they could disburse a loan of about $14.5 million among 20,000 merchants. So around $14.5 million, अब हिंदी में उसकी करोड़ में रुपए देख लेना, मैं अभी वो स्क्रीन में डाल दूंगा। 20,000 मर्चेंट्स तक वो लोन जो है इतना दे रहे थे, उनकी एबिलिटी बन गई। सो इस वैलिडेशन की वजह से उनको जो है उनके इन्वेस्टर्स से फरवरी 2020 में $75 मिलियन की फंडिंग मिली, उस प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे। राइट नाउ BharatPe's transaction volume is 100% in P2M. What is P2M? It's peer to merchants. Whereas here, UPI's use case and adoption is measured in P2P transactions, which is peer-to-peer transactions. By November 2020, क्या हुआ कि उनके प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड करी $479 million transaction value in a total of 61.5 million monthly transaction, and they overtook Google Pay. तो Google Pay को तो उन्होंने कंपटीशन से हटा दिया था, and they became the number 3 platform after PhonePe and Paytm. And around the end of 2020, they had 50 lakh merchants, 50 lakh merchants थे in 35 cities with a TPV, transaction payment volume, of $4 billion. बड़ी achievement है. Because of that, they got massive data on all these offline merchants, and this helped in expanding to an complete all-round financial services stack, which offered working capital loans, credit cards, insurance and investment products. To grow their loan book, BharatPe essentially wanted to, do a takeover of PNC Bank
alongside Centrum Group. Now, BharatPe का जो goal है as an organization, as a company, is to take over small merchants lending space, जो कि एक massive space है, and essentially become a neo bank. क्या आपको क्या लगता है BharatPe successful होगा? क्या उसकी स्टोरी सही है? क्या अश्नीर ग्रोवर, its MD and Suhail Sameer, who was onboarded as the recent CEO for the organization, will they be able to achieve their goal? Also, there is this recent news about, there is leaked audio call of Ashneer Grover abusing some kind and giving death threats to this Kotak Mahindra wealth management employee. But again, I don't have any proof of it. I don't have any details of it. So I'm not going to pay a lot of attention to it. But आप बताइए, क्या लगता है आपको? क्या BharatPe इस गेम को जीत पाएगी? क्या वो लेंडिंग स्पेस का, MSME लेंडिंग स्पेस का हीरो बन पाएगी? तो ये थी BharatPe की हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल एंड कंपटीशन। इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया, इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छी लगी, तो एक बारी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कर लो शेयर, हेल्प करेगा जो दूसरा बंदा देखेगा। मेरे को भी वायरल होना है। ठीक है, बाय।